So good morning, one and all. Happy New Year to everyone. So let's start what I think so. What we left before the vacations. I think so. We were discussing about the meteorology, air pollution concerns, and I think so. If you remember, we were discussing how the pollutants are being transported, are being diffused to one place to another place. I think so. We have covered this particular point, and we have covered these meteorological parameters. There are two type of meteorological parameters, primary as well as secondary parameters. So before actually going into detail, I'll let you know in 2 minutes what actually we were discussing. Actually, we were discussing like once the pollution is being created in the industry, no, air pollution is being created in the industry from the chimney, the fume or the smoke is going out. Now how far this particular smoke or the pollutant, SOx, NOx, PM, all kind of pollutants, air pollutants will travel, it all depends on the meteorological parameters and meteorological studies which we are going to discuss right now in today's class. Okay, now actually when the pollutants are being released, we want it should go up higher in the atmosphere so that the background concentration decreases. If the background concentration decreases, then their actual concentration is far less if they travel far away from the source. So that this will not happen, that re-entrainment. If the re-entrainment happen, it will come to the atmosphere again and it will fall out to the near places, and their near places may be of your homes also, houses also. Like I'm talking about Ludhiana, I'm talking about Bathinda, I'm talking about some area like we are living in, and you are being surrounded by industries, no doubt. So when you're surrounded by industries, so वो industry से smoke निकल रहा है, a lot of particulate matter is coming out, lot of SOx is, a lot of NOx is coming out, lot of other gases are coming out, but they are not reaching to your homes. You are not inhaling that, suppose. Now how it is effective, how it is being done, that's all being done on the basis of meteorological parameters, and on the basis of these meteorological parameters it's being decided okay, what should be the height of the chimney, and according to that area what is the wind speed, wind direction, all kind of parameters which I'm going to discuss right now, they are being installed over there. Otherwise होगा क्या बेटा, अगर ये चीज प्लान नहीं करेंगे हम तो, अगर ये नहीं प्लान करेंगे तो no doubt after some time you will feel that the pollutants will fall out within the 50 kilometer or 40 kilometer areas, and that's going to create havoc in that kind of area that we really don't want. So basically once we are going to decide okay, now how the pollutants behave when they're going to be released, it all depends upon the meteorological parameters. These meteorological parameters are of two types, primary as well as secondary. Primary, the meteorological elements, they have a most direct and significant effect on the turbulence level of the atmosphere. I'm talking about turbulence level, mind it. Okay, the turbulence level is basically talking about how atmosphere is behaving, how the atmosphere is behaving towards the pollutants. If it is turbulent, it is behaving differently. If it's stable, it is behaving differently, which I'm going to discuss right now in the class. Okay, which ultimately impact this turbulence level, which ultimately impact the distribution or dispersion of air pollutant, which I have discussed right now with you. Okay, how they are being distributed, how they are being taken away. So for example, wind speed, wind direction, temperature, all kind of these parameters are being taken into consideration when you're talking about dispersion of pollutants, and these are primary meteorological parameters. And some parameters which have a effect on the primary parameters, those parameters are called secondary meteorological parameters, like humidity, solar radiations, precipitation, the rain. Now all these kind of parameters, they are going to impact primary meteorological parameters. So you have to study both the parameters in detail, which now no doubt we're going to have this kind of detail in the coming slides. Now, this is something very important, but that's why I'm discussing this turbulence. You know what is turbulence? Turbulence is something called a vigorous motion. The vigorous motion is, पहले इसको define कर दो turbulence होती क्या है, फिर हम आगे move कर जाएंगे. But turbulence is what? Like you have a bucket, you have water in a bucket. Okay, so water
is there in the bucket stable. Okay, now what do? You stir it vigorously. When you stir it vigorously, then you see that there is a lot of random motion in the bucket of water, and that is called turbulence. Now what turbulence can do, मैं एयर में बाद में आता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देकर आगे मूव कर दूँ फटाफट. बेटा उस स्टेबल बकेट में, एक बकेट में पानी है, आपके पास पानी पड़ा हुआ स्टेबल है, यू पुट a drop of ink in that particular kind of water in a bucket. Now leave it as such. What you will observe that drop of ink, color ink, slowly diffuse into the water. Take a lot of time. Now do one thing. Put ink, do the turbulence, do the stirring, do the vigorous stirring. What will happen? Immediately, within seconds, the ink will be dissolved in the water. And this is something I'm talking about, power of turbulence. Now see how this turbulence is being effective. So बेटा अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब चीजें ये बता रहा हूँ आपको, क्लास में समझा रहा हूँ, you are listening to my lecture, later on you can listen to my videos. अब ये कई स्लाइड्स में मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है, यही आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा बेटा, ठीक है, कि क्या पूछा जाएगा, यही चीजें मैं बता रहा हूँ क्लास के. Okay, so how turbulence is going to affect the air pressure, which I'm going to discuss right now. The irregular air motion, irregular air motion is known as turbulence. So I explained you by taking example of water in a bucket. The irregular motion, air in terms of air, is known as a turbulence. And this turbulence can be of mechanical type or can be of thermal type, depending upon where it's being affected. So both these turbulence I'm going to discuss in detail, no doubt. Wait for some time. So when you're talking about the surface level, the ground level, the turbulence is commonly identified in terms of eddies, whirls, and gusts. If sometimes you see that in open field, you see that some eddies are being formed. You know what the eddies? The eddies are just kind of, eddies आपको देखी होंगी कि ये आपका surface है, and you will see that these kind of eddies. The whirlpool, I can say the whirl is formed. That is a called turbulence. Okay, so when wind is blowing over the ground, cause air to become gusty, and this will help the spread the pollutant by allowing them to mix more easily with the surrounding air, unpolluted air. Is called mechanical turbulence. See this here, beta. Wind is blowing over the ground. Now this wind is, when blowing over ground, will cause air to become dusty because it's going to trap the pollutants, like this pollutant, this pollutant, this pollutant. It's going to trap this pollutant. Now this air become gusty. When the air is blowing over this particular surface, all the pollutants which are present on the surface become, they will be, taken by this kind of air. So this air become gusty. So this air now going to mix with the surrounding air, which is a clean air, yes or not? So this means this will help spread pollutant by allowing them to mix more easily with a surrounding unpolluted air. And this will continue till you have a velocity of air velocity. When the air velocity is sustained, this will continue to pollute the air, unpolluted air, by mixing the polluted air, and this is called mechanical turbulence. Okay, so this is a mechanical turbulence. Now this is second term called thermal turbulence. This is mixing also happens when air is heated to a greater than that of air above. That's temperature gradient. You know very well how wind is blowing. This is how wind is blowing. See this is surface. When the sun rays are falling on the surface becomes heated. The temperature is very high. The air which comes in contact with the surface, immediate contact with the surface is heated up. So its temperature is high. When its temperature is high, the air immediately above this is having a low temperature. So there will be a temperature gradient between these two layers of air. Gradient, high temperature, low temperature. This is high, this is low. Why this is high? This air layer is being immediate contact with the earth surface. So this layer will transfer its heat
to the layer immediately above it. And this layer will transfer the heat to the layer immediately above it. If you agree with me, okay? Yes, yes, yes. Exactly, beta Girik. Okay, the layer of air at bottom is always higher because it is in immediate contact with the earth, because earth is at a high temperature surface. The ground level is, because ground is heated up. ओके तो इसमें क्या होगा, वो एयर जैसी हीट अप होगी, लाइट हो जाएगी, ऊपर राइज करेगी, वो लाइट ऊपर राइज करेगी. सो दिस इज कॉल्ड थर्मल टर्बुलेंस. सो उससे क्या होगा बेटा, इमेजिन करो उससे क्या होगा, जो पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट बिल्कुल नीचे वाली लेयर में है, जो हीटेड अप हो गई, लाइट हो गई, वो ऊपर राइज करेगा. तो जब ऊपर राइज करेगा वो सॉरी वो लेयर ऊपर राइज करेगी, तो अपने साथ पोल्यूटेंट भी राइज कराएगी ऊपर. तो वो जैसे ऊपर लाइट होगी, ऊपर राइज करेगी, दिस मींस ये लेयर ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी और आपके पोल्यूटेंट राइज करती जाएंगे ऊपर. सो दिस इज कॉल्ड थर्मल टर्बुलेंस. ओके, इज दैट ओके एवरीबॉडी? सो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एडिस क्या होती है. बेटा एडिस जो होती है, पढ़ना बेटा. एडिस, एडिस इरेगुलर मोशन बेटा. इरेगुलर मोशन जो होता है, आपके पास एक कंटिन्यूस मोशन जो होता है, एडिस बन जाती है. एडिस क्या होती है बेटा, मैं एग्जांपल देता हूँ. पानी के अंदर एडिस कैसे बन जाती है, सुनो. पानी के अंदर बेटा पानी है, मैंने अभी बताया आपको, एग्जांपल दी मैंने आपको, वहां से ऑब्जर्व करो एडिस क्या होती है. बकेट लिया, पानी है उसके अंदर. अब उसके अंदर आप ब्लो करो, एयर ब्लो करो, बहुत ही फास्ट एयर ब्लो करो. तो जैसे एयर ब्लो करोगे या उसको मिक्स करोगे, नीचे आप देखोगे बड़ा कंटिन्यूस मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी. जब कंटिन्यूस मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी, नीचे आप देखोगे इतने पानी जो है एडिस की फॉर्म में आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएगा. एडिस मींस इतना बड़ा चंक ऑफ फ्लूइड इज नाउ मूविंग. ठीक है ना. जब स्टरिंग करते हो तो क्या होता है, स्टरिंग करते हो तो आपके फ्लूइड मूव करता है आपका. यस और नॉट? यस 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 यस. मैं आगे बताने वाला हूं कि टर्बुलेंस बेनिफिशियल है कि नहीं है. जस्ट वेट फॉर सम टाइम बेटा. ठीक है जी. तो टर्बुलेंस बेनिफिशियल है कि नहीं है, मैं आगे बताने वाला हूं आपको. ओके, अब दो तरह का टर्बुलेंस है, मैकेनिकल टर्बुलेंस और थर्मल टर्बुलेंस. तो थर्मल टर्बुलेंस के अकॉर्डिंगली ये टर्बुलेंस बेनिफिशियल है. क्यों? कि जितनी टर्बुलेंस ज्यादा होगी उतना ये पोल्यूटेंट ऊपर 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 जाता जाएगा, और जितना पोल्यूटेंट ऊपर जाता जाएगा उतनी उसको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी. और अगर आपको पता है कि वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, उतना ये पोल्यूटेंट बहुत दूर तक जाएगा. जितनी दूर तक जाएगा उतनी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और जितनी इसकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कम होती गई तो आपके पोल्यूटेंट का बैकग्राउंड इफेक्ट कम होता जाएगा, तो एयर पोल्यूशन कम होगा बेटा. सो दिस इज समथिंग why we are why no listen one thing, why the industries are not being put up in those kind of places where the atmosphere is very calm. ठीक है, जहां पे बहुत काम एटमॉस्फेयर है. काम एटमॉस्फेयर मींस एयर वेलोसिटी नहीं है, विंड स्पीड नहीं है उस एल्टीट्यूड पे. तो उस एरिया में अगर इंडस्ट्री लगाओगे, तो उस एरिया की इंडस्ट्री लगाओगे तो नो डाउट वहां पे जो एयर पोल्यूशन होगा दैट विल फॉल आउट टू योर होम्स. आपके घरों तक वो पोल्यूशन आएगा बेटा. तो तभी ये बोला जाता है कि उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जहां पे मिक्सिंग हाइट एक लो लेवल पे हो, ताकि एयर पोल्यूटेंट उस लेवल में मिक्स होकर हाई एटमॉस्फेयर चला जाए, ताकि बैकग्राउंड कंसंट्रेशन और डिस्पर्शन उसकी हो जाए और उसकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कम हो जाए. Okay, so this is something I'm explaining. I want to explain this thing in detail, no, not in coming slides. Just wait for some time, beta. Okay, so this is thermal turbulence. I think so. You hope you have understood thermal turbulence, yes or not? So this causes, I told you, this causes bubbles of warm air rise. ठीक है ना. पता ही आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, ऊपर लाइट फ्लो करेगी, वो ऊपर फ्लो करती जाएगी, तो ऊपर फ्लो करती जाएगी तो वार्म एयर राइज करती जाएगी. तो वार्म एयर राइज करेगी. दिस विल कॉज this cause eddies which often take pollutant to higher atmosphere, which we really want. Because once the eddies में अभी बताया था, irregular motion जो है एयर का हो क्रिएट होगा, this will take pollutant to the higher atmosphere. When the take to higher atmosphere, आपको पता है कि जैसे ऊपर जाते जाओगे आप एटमॉस्फेयर में, आपकी विंड वेलोसिटी बढ़ती जाती है. तो जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो मेरे ख्याल से वो वेलोसिटी, एग्जांपल देता हूं आपको मैं. ठीक है, दिवाली पे सभी आप हॉट एयर बैलून रिलीज करते हो बाद में, क्रैकर चलाने के बाद. अब वो इसी की सेम एग्जांपल है, देख लो जरा आप. जब उसको हीट करते हो, कैम्फर को हीट करते हो, तो आपके बैलून के अंदर एयर भर जाती है, और जैसी बैलून के अंदर एयर भरती है तो वो राइज करना शुरू करता है,
और आपने देखा होगा कि कुछ राइज करने के बाद वो दैट बैलून इज बीइंग टेकन बाय द विंड्स टू द हाई एटमॉस्फेयर, वो ऊपर तक चला जाता है। वो सेम फंडा बेटा जो मैं बता रहा हूं, अब समझ आ गया होगा आपको वो चीज। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसमें जैसे एयर भरी हमने तो वो लाइट हो गया, लाइट होने के वो राइज करेगा। जैसे ही उसने राइज किया, कुछ राइज करने के बाद उसको विंड वेलोसिटी मिलेगी हाई, क्योंकि आपने जैसे उसको ऊपर भेजा, ऊपर जैसे जाते हैं तो विंड वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे विंड वेलोसिटी बढ़ेगी, वो बैलून को टेक टेक टू द हाई एटमॉस्फेयर, और जैसे हाई एटमॉस्फेयर ले गया तो आप देखोगे बहुत ऊपर तक चला जाएगा वो। तो सेम केस में यहाँ पे फंडा यूज कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, बेटर बैलून के एग्जांपल से जो दिवाली में रिलीज करते हैं हम। ओके, so this is something I'm talking about, जो मैंने explain किया है. This is called mechanical turbulence and this is called thermal turbulence बेटा. So basically mechanical turbulence is responsible for a horizontal air pollution, and the thermal turbulence is basically responsible for the vertical air pollution. Is that okay? Say this. So mechanical turbulence, the surface friction, no doubt, always produces mechanical turbulence in the airflow. So effect of the friction is least, you always know, over the smooth surfaces, that's water, and the greatest over the mountains because it's a very irregular. Okay, so it also depends upon the surface topography also, or the friction level also. So friction produces mechanical turbulence. Okay, the mechanical turbulence increases with both wind speed and the roughness of the surface topography. And no doubt, which I have explained to you, mechanical turbulence in particular area is responsible for the horizontal dispersion of the pollutants. Just I have explained to you this thing. It's responsible for the horizontal dispersion of pollutants, and it's being denoted by the wind roses. And what are wind roses? Just I want to explain this thing. Now what is wind rose बेटा? पहले एक बार बता दूं, फिर आपको मैं फिगर दिखाता हूं, फिर वापस इसमें आऊंगा बेटा. So wind rose is a graphical tool. This is graphical tool is used by the meteorologist to predict, to estimate, to give idea how in a particular location wind speed and direction are distributed. Okay, so how they are being wind rose, how they are being withdrawn, how they are being drawn, and how they are being plotted. I'm going to explain you. Just wait for a few seconds. I'm going to explain each and everything. So if you want to have a wind rose diagram for your Chandigarh area, and if you are living in Jalandhar, you want to have a Jalandhar area. If you're living in that area, want go to the net, right there in Google, the wind rose diagram of Chandigarh, wind rose diagram of this, wind rose diagram which being over there. तो wind rose क्या बताएगा? Wind rose ये बताएगा कि आपके एरिया में किस मंथ में, किस डायरेक्शन में, किस फ्रीक्वेंसी की विंड स्पीड चलती है और कैसे वो बिहेव करती है. और ये मेरे को बताएगा, क्या बताएगा? मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर मेरी उस एरिया में इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में जो पोल्यूटेंट रिलीज होंगे वो नवंबर टू जैन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैन टू मार्च किस डायरेक्शन में मूव करेंगे. बिकॉज आपको पता है कि चीज के लिए विंड स्पीड ऑफन वेरीज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. Wind direction varies. Wind direction, sorry. Okay, so when the wind direction varies, it's not always northeast. It can be northeast, it can be southeast. Okay, so we have to get the ideas. So ये क्या करते हैं, हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद हम इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं. उस डायग्राम को बोलते हैं विंड रोज. वो क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूं, समझ लो इसके लिए. So wind rose is going to, wind rose particular diagram is going to give you a tool to estimate how the wind speed and direction are distributed at a particular location in that particular area. Now I'm going to show first of all wind rose here, then I'll go back. Okay, see this. This is wind rose diagram. So when you go for Chandigarh, when you go for Panchkula, when you go for Jalandhar, all kind of thing, when you go to the Google, you will find for your area like this kind of diagram. Wind rose diagram. See, you have every direction, north, east, south, west. Okay, so you have multiple directions also. So now go back to the main slide. Now that direction of the rose with the longest spoke, see the longest spoke, this one,
the direction of the rose with the longest spoke show the wind direction with the greatest frequency. Okay, so presented in a circular format, the modern windrows show the frequency of winds. Frequency क्या है बेटा? ये रही frequency. Each concentric circle, कौन सा? Each concentric circle represents of different frequency. No, inventing from the zero at the center to increasing frequency at the outer circles. See this now. Okay. So these concentric circles are representing the frequency of winds. Frequency, different frequency. Okay. So length of each spoke around the length of each spoke around the circle, frequency wala circle, is related to the frequency that wind blows for a particular direction per unit time. Okay. So you have a spoke, you have a direction, you have a frequency, you have everything in the windrose diagram. So windrose plot can or may contain additional information that each spoke, if you see that each spoke, I'm going to show first of all the each spoke have color coding. See the color coding. Blue, light green, you know, this kind of colors are there. You can have different colors. Okay. Each spoke is broken down into color coded bands. Just I have shown you that show wind speed range. See this wind speed range. Okay. So it can be calm wind to a wind with the highest speed, 15.5 meter per second. So starting from base, ground level, when you go up, the velocity increases. Okay. So it can really show at what height the wind speed you are carrying, because you must know the wind speed you must be requiring, so that the pollutant which are being released from your industry, from your particular location, how far they can be taken away, and so that the background concentration decreases. So that's why we need a windrose diagram for that particular area when you want to install that some industry or some, you know, have some industry over there. So windrose is going to give you the this thing. So wind speed determines the travel time of pollutants from its source to the receptor and accounts for amount of pollutant dispersion. So windrose is going to give you two things: wind speed and wind direction, which are being damn required when calculating all these kind of things. So wind speed going to tell you the travel time of pollutant from its source to receptor. Okay, source to receptor. What is the vertical? बेटा बता रहा हूँ आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ. ठीक है जी. Source to receptor. And wind direction determines the direction of pollutant and at which receptor is being affected by time. मैंने अभी बताया था आपको कि wind direction often varies. Okay, when the wind direction is varying, so you know at what particular time which population is going to be affected, which receptor is going to be affected. So both these parameters are going to be defined by windrose. Okay, so this is a particular advantages, you know, but limitations include lack of precision. Means lack of precision, and vertical presentation means vertical data. Vertical data means when you go up, it's not exactly accurate. You can predict. Okay, vertical representation means, and it's a location specific, means when you have the locations, particular location, you can get the idea, but it's not exactly accurate, which you can predict. And vertical representation means when you go vertical data means go from ground to the higher level. Okay, the prediction is somewhat not very accurate, because you need to have very sophisticated instruments, sophisticated data when you get to know how it's going to behave at 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 60 meter, 80 meters, 100 meters. So that is not being accurate because everything has some limitations. Okay, so based upon this, you have a four kind of this scales of pollutions: micro, meso, synaptic scales, and global scales. So basically
When you're talking about micro scales, you're talking about air circulations within that 5 kilometer area within city. Okay, and when you have mesoscales, that is not talking about 5 to 500 kilometer range. That is how the sea, land breezes are flowing, how the mountain valley breezes are blowing. When you're talking about whole state, and no one talking about synoptic scales, you're talking about monsoon prediction, about dust storms, all kind of things. That's synoptic scales. Now when you're talking about global scale, that is how the distribution of temperature and pressure on the earth's surface, so overall global scale when talking about. So the according to predictions are going on. So this is thermal turbulence. Better go through this very fast. Thermal turbulence is associated with the instability in the convective activity. I told you, explained to you. Okay. So it is similar to mechanical, but it extends higher in the atmosphere. I told you it's a vertical, yes or not? See this now, these 2 points very clearly. Since it is a result of surface heating, thermal turbulence increases with the intensity of surface heating and the degree of instability indicated by the temperature lapse rate, which I'm going to discuss right now in the coming class. It shows the diurnal changes. What is that? Now, turbulence effect due to heat is most pronounced in the early afternoon. Why? Because the surface heating is maximum and air is unstable in the lower areas. पता ही आपको बेटा, देखो अगर दिन में धूप नहीं कर रही है, afternoon में heavy sunshine is there. When the heavy sunshine is there, the earth is heated up. When the air is heated up, earth is heated up, the air which is being immediate contact with that air, immediate contact with the earth is also heated up. Better lapse rate I'm going to tell you in the coming class. Wait for some time. Okay. आगे बता रहा हूं आपको, डोंट वरी. सो मैं ये समझ लो बेटा ध्यान से, फिर आप बोलना मिस हो गया कुछ. ओके. सो अब आफ्टरनून में तभी बोला जाता है बेटा, तभी इंडस्ट्री वालों को बोला जाता है कि रात को आप कम से कम एमिट कीजिए. व्हाई? बिकॉज रात को आपके पास सबसे कम टेम्परेचर होता है. लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट कम होता है. मैं बताऊंगा क्या लैप्स रेट क्या होता है बेटा. ठीक है. इट इज मिनिमम ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन द एयर इज मोर स्टेबल. ओके. नाउ इन द आफ्टरनून क्या होता है? आफ्टरनून में क्या होता है? हैवी सनशाइन होता है बेटा. हैवी सनशाइन की वजह से क्या होता है? एयर इज हीटेड अप. अर्थ इज हीटेड अप. अर्थ इज हीटेड अप. द एयर विच इज इमीडिएट कांटेक्ट ऑफ द अर्थ इज एट हाई टेम्परेचर. तो थर्मल टर्बुलेंस मैक्सिमम होगा आपका जब टेम्परेचर ज्यादा होगा. यस और नॉट? दैट इज एट द डे टाइम. सो उस केस में आपकी एयर अनस्टेबल होगी लोअर लेयर्स में भी, जो आपको चाहिए. यस और नॉट? जितनी लोअर लेयर्स में, लोअर लेवल पे आपकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना वो पोल्यूटेंट ऊपर राइज करता जाएगा बच्चे. जितना पोल्यूटेंट ऊपर राइज करता जाएगा उतना वो बहुत ऊपर जाके हाई वेलोसिटी को कैचअप करेगा. जैसे मैंने आपको बैलून की एग्जांपल दी थी, तो आपकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट की कम हो जाएगी. लेकिन अगर सेम चीज आप अर्ली मॉर्निंग और नाइट को रिलीज कर रहे हो, तो आपका जो स्टेबल एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेंट को राइज करने देगा नहीं. तो दिस वो वहीं पर रहेगा. ओके. तो सॉरी, मैंने एक एग्जांपल दी थी बेटा बच्चों को, ये वाली, और एग्जांपल सही भी लग रही है मेरे को बेटा. सब बताऊंगा, स्टेबल अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में सब बताऊंगा बेटा. 2 मिनट वेट कर लो बच्चे. ठीक है. स्टेबल एटमॉस्फेयर बेटा समझ लो बेटा. स्टेबल एटमॉस्फेयर क्या है? स्टेबल एटमॉस्फेयर ये वाला है बेटा कि आपका, अभी सुनो एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको. बाकी मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं बेटा. मैं बोल रहा हूं कि जब सनशाइन हो रहा है दिन डे फुल डे में, जब सनशाइन हो रहा है तो आपकी अर्थ सरफेस हीटेड अप हो गई. जब अर्थ सरफेस हीटेड अप होगी, जो एयर उसके इमीडिएट कांटेक्ट में है सरफेस के, वो हीटेड अप हो जाएगी. वो हीट अप हो गई तो उसने ऊपर वाली लेयर को हीट अप कर देना है. थर्मल टर्बुलेंस जो पढ़ा के चुका हूं आपको मैं, अभी पढ़ा के चुका हूं थर्मल टर्बुलेंस आपको. तो दिस मींस लेयर हीट अप हो जाएगी एयर की. वो लेयर अपनी ऊपर वाली लेयर को हीट करेगी, वो ऊपर एयर करेगी, तो लेयर ऊपर मूव करती जाएगी. तो लेयर ऊपर मूव करती जाएगी, तो जो पोल्यूटेंट बीच को नीचे वाली लेयर में है वो अपना ऊपर राइज करता जाएगा ड्यू टू थर्मल टर्बुलेंस, क्योंकि आपकी अनस्टेबल है. अनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्यों हो गया? क्यों अनस्टेबल? इसलिए हो गया बिकॉज एयर अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज थर्मल टर्बुलेंस है. थर्मल टर्बुलेंस क्या होती है? थर्मल ग्रेडियंट टाइप का. एक टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर का लेयर का कम है, तो उसको हीट अप कर देगी, ऊपर मूव करेगी. ऊपर वाली उसके ऊपर को हीट अप कर देगी, तो आपकी अनस्टेबिलिटी होगी. तो जब अनस्टेबिलिटी होगी तो चांसेस ये है कि पोल्यूटेंट जो नीचे पड़ा हुआ है वो ऊपर राइज करता जाएगा, जो मैं पढ़ा के चुका हूं मैं. तो उसको पढ़ लेना बेटा.
तो पर मॉर्निंग और नाइट में क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग और नाइट में क्या होता है, आपका सरफेस हीटेड ही नहीं है, टेम्परेचर डाउन है। टेम्परेचर जो डाउन है, जो लेयर बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट में है, वो वहीं रहेगी। जब वो वहीं पे रहेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी एयर में। जब एयर में स्टेबिलिटी रहेगी तो पोल्यूटेंट जहां पे है वहीं पे स्टेबल रह गया, वो राइज नहीं करेगा वो। ठीक है, तभी मैं एग्जांपल देता हूं कि जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज हैं बेटा, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो मोर प्रोन टू है, एग्जांपल देख लो, मोर प्रोन टू डिजीज हैं। क्यों? जो मॉर्निंग वॉक में जाएंगे बेटा, एग्जांपल दे रहा हूं कि रात को पोल्यूटेंट रिलीज हुए, वो कहीं गए ही नहीं, वो स्टेबल एटमॉस्फेयर में रहे। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर रहे तो राइज किए नहीं, तो चांसेस है कि फॉल आउट कर जाएं। तो फॉल आउट कर जाएंगे तो चांसेस है कि लोअर एटमॉस्फेयर में जाएं। चांसेस है कि लोअर एटमॉस्फेयर में आगे जो मॉर्निंग वॉक पे जाके भाग रहे हैं तो दे विल इनहेल दोस काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स। ओके, सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, और इसको डिटेल में एक्सप्लेन हम करेंगे नो डाउट नेक्स्ट क्लास में, बट इसको आगे देख लो बेटा। सो दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, उसकी डिटेल डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, लेकिन आप पढ़ लो जो अभी बता रहा था बच्चों को, उसके बारे में स्टेबल अनस्टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर ये पढ़ लो लैब स्टेट क्या होता है, इसकी डिस्कशन कल क्लास में करके थोड़ा मैं वाइंड अप कर दूंगा, फिर मैं सीधा आगे मूव कर जाऊंगा बेटा, कुछ आपके लिए भी छोड़ना है मेरे को। ठीक है, सो लैब स्टेट, सो ये थर्मल टर्बुलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैब स्टेट बेटा। दिस इज हाउ you are going to estimate what is the rate of decrease in temperature with altitude. You know very well, moment you go up from the plains, the temperature decreases, yes or not? And this temperature is going to affect the dispersion of pollutants. So that's why that's why we need to study the lapse rate in detail. What are these kind of lapse rate? So see, this is an important concept while you describe the vertical movement of the air, and this is how we're going to talk about lapse rate. So basically there are 4 type of lapse rate: ELR, DLR, WLR, PLR. I'm going to discuss this thing right now somewhat, and rest I want to discuss in the next class. So environmental lapse rate, basically this is actual measured decrease in air temperature with increase in the altitude. This means environment का lapse rate क्या है? Environment का lapse rate means, समझो मेरी बात बेटा, atmosphere का lapse rate है ना, कि एक्चुअली एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट का टेम्परेचर विद हाइट कैसे डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, द एक्चुअल मेजर्ड डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एंड इट इज जनरली 6.5 डिग्री पर 100 मीटर, 1 किलोमीटर। ओके, तो 1 किलोमीटर जैसे ऊपर राइज करोगे आप, द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड. Then you have 2 theoretical concepts over here. This one, DALR, WALR. DALR is a dry adiabatic lapse rate. It is theoretical. See, the actual and theoretical. It's a theoretical rate of cooling of air with no moisture. Mind it. We are assuming that there's no moisture in the air. अब मैं थोड़ा वेट कर लो बेटा, मॉइस्चर का पूरा बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको कि मॉइस्चर होता तो क्या होगा. So dry adiabatic lapse rate is the theoretical rate of cooling of air with no moisture, assuming that no moisture in the air is there, with increase in altitude, and it is near about 9.8 degrees centigrade per kilometer. And you have wet adiabatic lapse rate, and it's a theoretical reduction in temperature in elevation with saturated air. What is saturated air? When you assume that the air is having a moisture, water vapor, and no doubt it is much less than DALR, which I'm discussed right now, and it is usually, which wet adiabatic is 5.6 degrees centigrade per 1 kilometer increase in height. Okay. Then the last is the PLR. PLR assume बेटा, PLR क्या है बेटा? प्रोसेस लैप्स रेट. ये किसका लैप्स रेट है बेटा? जो पोल्यूटेंट रिलीज हुआ है उसको पफ बोलते हैं. सो देखो, पफ ऑफ एयर बोलते हैं ना, पफ्स, जो सिगरेट वाले बंदे बोलते हैं ना, पफ रिलीज हुआ. जब सिगरेट बंदा पीता है तो पफ ऑफ एयर बोलते हैं हम, बीइंग रिलीज फ्रॉम द माउथ. अब वो चिमनी से रिलीज हो रहा है आपकी, किस चिमनी से? इंडस्ट्री की चिमनी से रिलीज हो रहा है. ओके,
सो कंफ्यूज नहीं होना सबको बेटा. अब PLR is the process lapse rate. Okay. But the WLR, I'm going to explain here. WALR is the wet adiabatic lapse rate, and it is basically, I'm assuming that the air which is there, it's saturated. Saturated means it's containing a moisture. It's containing a water vapors. Okay. So it's a theoretical reduction in the temperature with elevation, with increase in altitude in saturated air, when assume that the atmosphere is saturated with water vapors. Whereas dry adiabatic means I'm assuming that there is no moisture. So it is WLR. I'm going to tell you something in the next class also about regarding this, but last you just cover before the time is over. Process lapse rate. It is a rate at which, now see this, temperature of pollutant mass, puff. Puff is a pollutant mass. Pollutant mass means जो आपका puff है, release हुआ जिसमें pollutant आपकी, is decreasing with altitude due to expansion of flue gases. Okay. बताएंगे बेटा वाई DLR इज लेस देन WLR. वेट कर लो, एक स्लाइड की वेट कर लो, पूरा बताने वाला हूं आपको बच्चे. ओके. Sukraj, wait for some time. Okay. So I'm stopping here. I'm stopping here, but I'm stopping here. I'm having doubts. ठीक है. प्रोसेस लैब पे खत्म कर रहा हूं बेटा. It's so I'm allowing you to unmute yourself. You can ask me questions, beta. Yes, beta. You can ask now. Yes, beta. बेटा फ्लू गैसेस मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. मैं सुन लो फ्लू गैसेस क्या होती हैं. फ्लू गैसेस होती हैं बेटा जो चिमनी से रिलीज होती है इंडस्ट्री से. Okay, more doubts? No, sir. Oh, very good, excellent. So should I wind up over here? I stop over here, beta.